Guys, engineer vade wale. This is in Baner. This is bloody brilliant vadas. These are the best I've had so far. And the prices are in Hindi, of course. You can read them. But this is insane vada. एक पोहा भी पार्सल करना. क्या आप ताज़ा बना रहे हो? ताज़ा बना रहे हो? वाह. क्या नाम है भैया आपका? हाँ, दिनेश. तो आप दोनों मिलके ही चलाते हैं? अच्छा. वो आते हैं लेकिन रोज? हाँ, 9 बजे. सुबह कितने बजे खोल देते हो? 7 बजे. One hour later. Yes. मॉमी टू बी enjoying वड़ा पाव चाय बारिश. क्या बात है. Very nice. Nice, you like it? Yes. This vada pav wala is engineer. Very good. Engineer vada pav wale. From Pune. Baner. This is good. So far, it's like, The good one. yeah. Barish, chai, vada pav. Vada wow. So I used to hate vada pav. And now? We moved to Pune. In And Delhi, now? I used to be like, no vada pav. Now you have my genes in you, no? So you like I everything. love vada pav. Yeah. In Delhi, I used to love momos. That much I love vada pav now. Equally almost. But I haven't had momos for like 6 months. I miss momos. Chanakya Puri momos. Oh yeah, those are the best. Chanakya place. Chanakya place. The Chicken. Yashwant Rao. Yeah. Yashwant place. Yashwant place, not Chanakya place. Yashwant place. And the pork But those, momos. yeah, those momos are insane. And Those are chicken the. fried momos. I think those momos, na, they are pretty much the best momos in Delhi. I think, and that's a big statement to make. You know, best momos in Delhi, because Delhi has a lot of momos, and everyone I'm sure has a favorite. But guys, if you haven't tried that Yashwant Place momos next to the Chanakya PVR, there's like this whole food court which is there for years and years. Go there and try out their momos. There are like 20 Tibetan food shops in line. Order from anyone. If you're a non-vegetarian, do try their pork steamed momos And chicken fried. and chicken fried momos. That'll be the best momos you. And also, if you like a normal roadside, no, then you should try Green Park Metro Station. Yeah, that's also my office was there, no. So I've tried that. Like the market near Green Park Metro I used to pick people from the metro, no. So Which people? some people. I was a taxi driver, no. For girls. ग्रीन पार्क मेट्रो कहाँ से All आती his है? girlfriends ग्रीन पार्क who मेट्रो are कहाँ से? watching ex-girlfriends. He's taken you guys to the best of places, but after getting married, he's become one conjuice. Only vada Conjuice pav and monkey chai. juice. Monkey juice. वड़ा पाव एंड चाय फॉर मॉमी टू बी. भाई ये वड़ा पाव तो मैं एक और खा सकती हूँ. खा ले भाई. सो ये हमने बड़े एंड मिर्चें एंड चूरा सब डाल लिया एयर फ्रायर में. ये मेरा बड़ा पुराना एयर फ्रायर है, बहुत साथ दिया इसने. करीब 10 साल पुराना होगा ये, इफ नॉट मोर. सो लेट्स फिक्स दीज वड़ा पाव्स. सो ये सुबह के वड़े पाव हमने डाल दिए हैं सीधा एयर फ्रायर में विद द चूरा एंड द हरा मिर्चा. एंड नाउ विद इन 2-3 मिनट्स on 180. Let's do it on 180. Yeah, 2-3 minutes of this, it'll be fresh and crisp. So let's do that.
अरे पुराना है, 10 साल पुराना, क्या हो गया? बड़ा बड़ा साथ निभाया इसने मेरा. गुड बॉय. पाव और सूखा चटनी की तैयारी यहाँ पे पूरी है. एयर फ्रायर में बड़े फ्रेशन अप हो रहे हैं. फिर तबाही. पीछे बन रही है चाय अदरक वाली. आई डोंट लाइक मीठा चटनी इन माय वड़ा पाव, but however I do like this. Oh yeah. Ooh, super fresh and crisp. Will be hot. Oh, that's one vada pav. Vada wow. This is the best bits, the yummy bits. No. Mirch. Yes. There's a mirch inside as well. Thank you. So इसने 19th Feb को इस साल खोला था अपना ये इंजीनियर वड़ा वाले ने. एंड मार्च में हो गया लॉकडाउन. बेचारी की दुकान हो गई बंद. तो अब 2 हफ्ते हुए हैं दोबारा खोले हुए. So guys, if you are in Pune or if you ever visit Pune, it's very close to the highway. If you're coming from Bombay, I'm guessing. So do visit Engineer Vada Wala. It was insane vada pavas. What I was saying, no, that lasun and dhania perfect amalgamation. This is insane vada pav. बहुत ही बढ़िया. मेरे को तो ये वो जो गार्डन वड़ा पाव वाला है ना, उससे भी बेटर लगा. Yeah. Even what garden, even that golden vada pav in Lonavala, I think this is better than that also. And just recently opened up first joint in Pune. And small businesses, ऐसे कितने businesses होंगे जो लॉकडाउन की वजह से छोटे छोटे बेचारे लोग दुखी हुए होंगे. काम में पैसा लगाया होगा लेकिन कितने रेस्टोरेंट्स हाँ बंद हो गए यार. बंद हो गए यार. इंटीरियर्स पे करोड़ों रुपए लोगों ने खर्चे. लॉकडाउन हो गया तो चले ही नहीं. ब्याज का मीटर तो चल ही रहा है, इंटरेस्ट तो लग ही रहा है. सो हम लोग जो सेफली बैठे हैं घर में, हेल्दी हैं, खाने पीने को मिल रहा है, वी आर वेरी लकी. अब हमको थैंकफुल होना चाहिए. सो दिस इज, आई नो दिस इज नॉट अ ग्रैटिट्यूड एंड this is like a funny daily vlog. We shouldn't be talking about sad stuff, but this is the reality. We should support small businesses because they're the ones who suffer a lot, not Reliance. Reliance doesn't suffer. Reliance bloody doubled in net worth in 2020. So, vada pav on, game on. और भाइयों और बहनों और भाइयों की बहनों, सब्सक्राइब करो यार. इफ यू आर लाइकिंग द व्लॉग्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप watching AB Jalebi for you.